Welcome friends, we are talking about ecology. We are making videos of ecology from last couple of days. Today's topic which we will be discussing is ecological succession. Ecological succession. Ecological succession. You know, this ecological succession एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार टॉपिक है, अल्ट्रा इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसको आप समझिए क्योंकि एग्जाम में इसको आने के अच्छे खासे चांसेस हैं. बोर्ड एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है, राइट. देखिए, इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर हम देखेंगे व्हाट दिस एक्चुअली मीन्स. As the term suggests, ecological means related to ecosystem, right? Related to ecosystem. And succession means succession of something. Succession of something. Succession of something. I will tell you which thing. Something. What is this something? This is succession of life, living life. So, this ecological succession is succession of life in an ecosystem, right? You know, friends, आपको पता है कि ओडम जिनको कंसिडर किया जाता है father of ecosystem ecology. He has defined ecosystem as the smallest structural and functional unit. Structural and functional unit of environment. Or when I say environment, I say nature. So, as per the definition of ecosystem by Odom, who is considered as father of ecosystem ecology, ecosystem is the smallest structural and functional unit of environment or nature. You know, this mother nature plays games with us. Sometimes in this nature, mother nature, some calamities occur, such as जैसे earthquake आता है, volcanic eruption हो जाता है, flood आता है, या even for that matter forest fires होते हैं. What happens then? Suppose in an ecosystem, these natural calamities, in these natural calamities can be man-made also, but suppose these are natural calamities. Suppose earthquake, volcanic eruption, floods, forest fires. What they actually do, they just try to halt the life in ecosystem. You know, ecosystem has two components, biotic components and abiotic components. In abiotic components, you can see plants, in biotic components, plants, animals, and microorganisms. And in abiotic components, you can see non-living things, such as you can see organic substance, inorganic materials. You can see climatic factors such as temperature, water. You can see edific factors such as soil. Now, once these natural calamities occur in an ecosystem, in the mother nature, right? These calamities directly affect the ecosystem. सबसे पहले ये क्या करते हैं ये नेचुरल क्लाइमेटीज, ये
इकोसिस्टम में जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको टारगेट बनाता है, और इन इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स, इस इकोसिस्टम में लिविंग थिंग्स को वाइप आउट करते हैं। प्लांट्स खत्म हो जाते हैं, एनिमल्स खत्म हो जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाते हैं, एंड फिर उनका नेक्स्ट टारगेट होता है दिस एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट ये भी शैटर होने लगता है इकोसिस्टम का, कभी कभी सॉइल भी खत्म हो जाती है। तो लिहाजा यहां पे हमारे पास एक इकोसिस्टम था, नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से इसके लिविंग थिंग्स वाइप आउट हो गए, राइट। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में कहीं सॉइल रह गई एंड कहीं सॉइल नहीं रह गई, soilless. Now we have an ecosystem which is now just shattered, right? It is broken. All its living organisms have been wiped out. And even for that matter, abiotic components have also been affected to a greater extent. ज़्यादा इन पे भी इफेक्ट हो गया। कहीं हम लोग देख सकते हैं कि सॉइल भी चली गई है, and we have an ecosystem which is completely shattered. This is soilless ecosystem. And sometimes we can have an ecosystem which is shattered, but it has soil, dead soil. Now, what will be the alternative for such ecosystems? Because life has been wiped out, but life tries to rebuild. It's basically the habit of life. It tends to live. Living organisms tend to live. They fight these forces, which I may call here the destructive forces, disrupting forces. This life, whatever the life is, whether it is a living plant, it is an animal, the life tries to fight these forces, disruptive forces, destructive forces. Life has the habit of standing, strong before these forces. History tells us. So, if I will quote you a beautiful quote of famous evolutionary biologist Richard Dawkins, he says that none of our ancestors died young, and none of our ancestors failed to copulate. It means if our ancestors would have died young, our existence today would have been impossible. We have not been here where we are. So he's explaining the example कि लाइफ है, लाइफ को फाइट बैक करने की ताकत है। जो फोर्सेस लाइफ को इकोसिस्टम से वाइप आउट करना चाहते हैं, ये लाइफ फिर रेजिलियंस दिखाती है, फाइट बैक करती है, और फिर ये लाइफ फिर जिंदा हो जाती है, फिर ग्रो करती है, फिर प्लांट्स ग्रो करते हैं, एनिमल्स ग्रो करते हैं। तो ये सब बात जो मैंने आपको बता दी, इसमें आपको एक बात समझ में आ गई कि जब ये तमाम सब होने के बाद फिर रेस्टोर लाइफ हो जाएगी। सपोज हियर वाज एन इकोसिस्टम, okay, this was ecosystem, okay, therefore it is biotic and abiotic components. Then came the forces, disruptive forces, came earthquake, volcanic eruption, flood, forest fire. This ecosystem was disrupted, shattered, then all life was gone, right? Then what was left? We were left with an ecosystem. Either it was with soil or it was without soil. From this soilless or with soil ecosystem, life grows. Life is restored. This restoration from this back to its original position, when it was in a full-fledged form, an ecosystem, when it was having all its components intact, when all its components were flourishing, living a good life. After being disrupted, after being shattered, after being, broken down by the disruptive forces,
These forces could be natural, these forces could be man-made. Now, the ecosystem has restored, is trying to restore its life. If it restores its life, we say that ecological succession has evolved, has occurred. This is basically the main theme of ecological succession. Okay, now let's go to define ecological succession. Ecological succession, if I may define ecological succession is defined as replacement of existing plant and animal communities. Ecological succession is defined as replacement of existing plant and animal communities. By new plant and animal communities. I mean by new ones. In an area, किसी खास एरिया में, over a time, in a given time, due to changes in physical environment. Right? This is definition of ecological. You can define like this. Ecological succession is defined as replacement of existing plant and animal communities by new plant and animal communities in an area, एक खास एरिया में, over a time, किसी खास वक्त में, due to changes in physical environment, physical conditions. Suppose, let me elaborate this definition. मैं आपको इसको थोड़ा खोल के बता दूं. अगर ये एक इकोसिस्टम था, इसमें प्लांट्स थे, मान लीजिए इनको मैं प्लांट्स कंसिडर करता हूं, इसमें एनिमल्स थे, हर किस्म के डिफरेंट वैरायटीज, ठीक है? ओके, ये बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर रीजन डिसरप्ट हो गए थे, ठीक है ना? अब इनको रिप्लेस किया है, ठीक है ना? इसके बाद ये प्लांट्स आ गए, सपोज इससे बड़े प्लांट्स आ गए, ठीक है ना? इनको फिर रिप्लेस किया इससे बड़े प्लांट्स ने. तो एक एरिया में अगर सपोज इट्स ए फॉरेस्ट, इसमें एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीसीज एंड एनिमल कम्युनिटीज आई में से अगर इनको रिप्लेस किया न्यू प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज ने, पुराने वाइप आउट हो गए, आप इनको रिप्लेस किया न्यू प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटीज ने एक खास एरिया में किसी खास वक्त में. क्यों? ड्यू टू चेंजेस इन फिजिकल कंडीशंस. क्योंकि बाय वन वे और अदर वे द एग्जिस्टिंग प्लांट स्पीसीज वर वाइप्ड आउट फ्रॉम द एरिया. नाउ दीज वर रिप्लेस्ड बाय अदर प्लांट कम्युनिटीज. दिस इज definition of, let's see another definition of, ecological succession. Ecological succession can also be defined. Ecological succession is the gradual replacement of existing biotic communities. Ecological succession is gradual replacement of existing biotic communities by new biotic communities. In an area
in an area at a particular time. This is the definition of ecological succession. Ecological succession is the gradual replacement of existing biotic communities by new biotic communities in an area at a particular time. Now, suppose this is an area. This was an area, right? This is a rock. Okay? Volcanic eruption occurred. ठीक है, lava was formed, lava बन गया, ठीक है. When this lava, cooled down, now this lava didn't have any sort of soil in it, right? And on this cool lava, now we have to see how living organisms will try to grow. ठीक है, एक एरिया में जो जो पहले क्या बोलते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इसको इनहैबिट करते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर पायनियर कम्युनिटी. Pioneer community. The first living organisms to grow at a place, newly formed ecosystem. First community to colonize in that area. That is known as pioneer community. Suppose this was a rock. First community to colonize the rock. Whatever living organisms those are known as pioneer community. And lost communities of plants or animals जो इस एरिया में ग्रो करते हैं, दैट इज नोन एज क्लाइमैक्स कम्युनिटी. क्लाइमैक्स कम्युनिटी, राइट? सबसे पहले एक एरिया में, चाहे ये रॉक है, चाहे ये सॉइललेस कूल्ड लावा है, चाहे ये न्यूली फॉर्म्ड लैंड एरिया है, चाहे ये वाटर है, चाहे ये सैंड है, चाहे ये स्टोन है, व्हाटएवर इट इज, इसमें सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं, जो कॉलोनाइज होते हैं, दोज आर दैट कम्युनिटी. When I say community, it takes together all the living organisms. It's not for a particular, this living organism. That is known as pioneer community. And the last community to inhabit this area, इस एरिया में जो सबसे लास्ट में आने वाली कम्युनिटी है, that's known as climax community. Okay? Now, in between the first community, which is known as pioneer community, and the climax community, there are other communities. There also occur some communities. Those communities are known as transitional communities or serial communities. Transitional communities. Or seer. These are also called as seers. Some people call this seer. बीच में जो कम्युनिटीज आ जाती हैं, जो टेम्पररी फेज की होती है, इवन फॉर दैट मैटर पायनियर कम्युनिटी भी टेम्पररी फेज की होती है, ये परमानेंट नहीं है, ये लेस स्टेबल होती है. पायनियर कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो एक एरिया में जिसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन होना है, राइट? इकोलॉजिकल सक्सेशन उस एरिया में होती है जहां अभी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करता है. ठीक है, तो उस एरिया में अगर रेस्टोर करना है, जो मैं अभी बात बता रहा था, इकोसिस्टम को, फुल्ली फंक्शनल इकोसिस्टम को, मींस कि जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो,
तो उस एरिया में सबसे पहले उगने वाले ग्रो करने वाले प्लांट्स आर एनिमल्स, उनको कहते हैं पायनियर कम्युनिटी। और इस एरिया में लास्ट में ग्रो करने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लाइमेक्स कम्युनिटी। इनके दरमियान में बड़ी सारी कम्युनिटीज आती है। ऐसा नहीं है कि पहला और लास्ट, ये जो बीच वाला कम्युनिटी होता है, बीच वाली कम्युनिटीज होती है, उनको ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहते हैं। when one community passes to the other community, transitional, ये टेम्पररी होती है, राइट। इनको ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहते हैं या सीरल कम्युनिटीज कहते हैं, सीरल कम्युनिटीज। बिकॉज इन कम्युनिटीज को इंडिविजुअली अगर कहा जाए, इनको सियर कहते हैं, सरे इनको कुछ लोग कहते हैं, सरे SERA या सियर SERE सियर, SERE सरे। These are different pronunciations. Whatever you like, you can pronounce it accordingly. So, 3 things हमने देखी, 3 चीजें देखी। एक तो पायनियर कम्युनिटी देखी, एक तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखी, एक तो ट्रांजिशनल कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटीज, शेयर्स देखे। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको जल्दी में बता दूं, उस एरिया में जहां अभी इकोलॉजिकल सक्सेशन होना है, जो एक एरिया विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है, विदाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स था, उसमें अब इकोलॉजिकल सक्सेशन होना है। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है? जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी एरिया में खत्म होते हैं, राइट, तो उनको रिप्लेस किया जाता है, वो फिर रेस्टोर हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले कम्युनिटी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, उनको, उस कम्युनिटी को पायनियर कम्युनिटी कहते थे। और फाइनल में आने वाली कम्युनिटी, जिसको क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते थे, इनके दरमियान में भी कुछ कम्युनिटीज आई। इन बिटवीन दीज 2 कम्युनिटीज देयर वर आल्सो कम्युनिटीज, जिनको ट्रांजिशनल कम्युनिटीज कहते थे, सियर्स कहते हैं, सर्रे कहते हैं, सेरस कहते हैं, या सिरल कम्युनिटीज कहते हैं। ये जो सिरल कम्युनिटी, ये जो पायनियर कम्युनिटी होती है, ये लेस स्टेबल होती है, टेम्पररी होती है। इसको जल्दी एक दूसरी क्या बोलते हैं कम्युनिटी क्या बोलते हैं रिप्लेस करती है। जबकि क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होता है ना, ये बड़ा स्टेबल होता है, स्टेबल कम्युनिटी। इसके आगे इकोलॉजिकल सक्सेशन नहीं हो सकती है। इज द फाइनल स्टेज, आई मीन द फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इज द क्लाइमेक्स कम्युनिटी। बट आपको ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी के बाद कुछ हो ही नहीं सकता। सपोज एक फॉरेस्ट है, इसमें क्या बोलते हैं, दिस ट्रीज आर देयर, राइट। नाउ वी मे से कि अब इसमें सक्सेशन हो ही नहीं सकता। सपोज बाय वन रीजन और अदर रीजन these trees fell down, died down, then there is possibility that ecological succession can occur in these areas, in these openings which were created by falling down or dying down of the trees of the forest. But as a whole, I'm telling you that beyond this climax community, ecological succession doesn't go beyond this climax community in normal circumstances. And in between these communities, there are many communities coming, growing, being replaced by other communities. Those are known as transitional communities. Okay, that's all, transitional communities. Now, another point which I want to tell you here is when ecological succession takes place, in water, when ecological succession takes place in water, that is known as hydrosphere, hydrarch, or hydrosphere. When ecological succession takes place in arid area, dry area, this is known as xerarch. These have other names also, इनके और भी नाम है। xerarch को हम जीरो शेयर भी कह सकते हैं,
ठीक है, हाइड्रॉइड को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन रॉक पे हो गया, दिस इज लिथोस्फीयर। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टोन पे गया, सैंड पे, दिस इज सैमोस्फीयर, SAMMOSER, Samosphere. Right? These are different types of, ecological successions. Right? Now, placement of ecological succession. Where this ecological succession takes place. In other words, I may say there are two types of ecological successions. Number one, types of ecological successions. Ecological succession. Number one, primary succession. Primary succession. And number two, secondary succession. Secondary succession. Primary succession takes place in an area. Let's come to the first one, primary succession. It takes place in an area which was earlier uninhabited. ऐसा एक एरिया जहां कम्युनिटीज, बायोटिक कम्युनिटीज ग्रो करना शुरू करते हैं, लेकिन इस एरिया में कभी भी बायोटिक कम्युनिटीज नहीं थी. Right? Primary succession takes place in an area which was earlier uninhabited and soilless. इसमें soil वगैरह नहीं था. Example of primary succession I can take rock. It can also occur in water. ठीक है ना, मैं रॉक की बात करता हूं. Cooled lava. Because in this area, life was not present earlier. It was uninhabited area and it was soilless area. In this area, if ecological succession starts, this is known as primary succession. This area was having no life earlier. This area was having no organic matter earlier. This area was having no, soil earlier. Now, in such area, if ecological succession occurs, we call that ecological succession as primary succession. What are the examples of primary succession? I have told you that if succession occurs on rock, if succession occurs on cooled lava, if succession occurs on a land area, newly formed land area, this is primary succession. If primary succession occurs on water where there was no life earlier, in water body, any water body, we call that succession as primary succession. Okay. Now come to the second one. This is secondary succession. Secondary succession is that it is a reverse of primary succession. Is that area which was earlier inhabited. This was uninhabited area. It was earlier inhabited. Earlier the life was there. Earlier the organic matter was there. Earlier everything was there. But because of some disturbance, this area was devastated. This area was eroded. And now on this area, if the succession begins, ecological succession begins, we call it a secondary succession. Only difference between primary succession and secondary succession is, प्राइमरी सक्सेशन में एक ऐसे एरिया में इकोलॉजिकल सक्सेशन शुरू हो जाता है जो एरिया पहले अनइनहैबिटेटेड था, जिस एरिया में लाइफ नहीं थी.
जिस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर नहीं था, जिस एरिया में सॉइल नहीं थी, राइट। जबकि सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसा एरिया, सेकेंडरी सक्सेशन एक ऐसे एरिया में होती है जो एरिया पहले इनहैबिटेटेड था, इस एरिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इस एरिया में ऑर्गेनिक मैटर था, इस एरिया में सॉइल थी, बट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंसेस, natural calamities, man-made calamities, this area was disrupted, this area was destroyed, and now succession has began to take place in such areas. Such a succession is known as secondary succession. You may always remember it. Okay, now come to the other. Then, if I will tell you what this mechanism is, basically. However, today it is our introduction to the ecological succession. More things will follow. We will discuss it in detail. We will go through every, ABC of this, A to Z of ecological succession. But today I will just give you an outline. मैं आपको आज एक outline दे दूंगा कि ecological succession में क्या होता है basically. Suppose this is, an area. It's a newly formed area. It's a rock. It's a cool lava. After volcanic eruption, cooled lava is now here. Now, from some other source, agency, some seed-like thing, propagule-like thing fell on it, right? तो यहाँ पे जब शुरू हो गया, यहाँ पे तो इस पे सबसे पहले ग्रो करने वाले ऑर्गेनिजम्स, suppose these were lichens. Yes, these were of course lichens. These lichens. Okay. Lichens start to grow because lichens have a habit. इनकी एक आदत है. If you have heard about lichens, these are those living entities which grow in very harsh environments. Cooled lava is also a harsh environment. There is no soil, there is no organic matter, there is no life. When lichens, come by their propagules, whatever those, reproductive, structures, units, now they start to grow. They don't find any difficulty in growing on a cool lava rock. Why? Because they are, they are in habit of it. They usually grow in such types of habitats. And after some time, these lichens, what they do, these, die. Okay, their excretive material is acidic. Once they die, their excretive material is, acidic, and their body, it serves as an organic matter to this cool lava. Now we have two things. हमारे पास दो चीजें हैं. एक इनका एसिडिक, एक्सक्रीटिव मटेरियल जो एसिडिक था, एक इनकी डेथ हो गई जो ऑर्गेनिक मैटर बन गया. एसिडिक में ये जो एक्सक्रीटिव मैटर है, इससे रॉक क्रोड होना शुरू हो गया, राइट? जब रॉक क्रोड हो जाती है, टूटने लगी, विदरिंग ऑफ रॉक बिगेन टू टेक प्लेस ना, राइट? एंड देन ऑर्गेनिक मैटर was combined with it. A thin layer of soil began to form. एक छोटा सा thin layer बन गया soil का. This is the problem for lichens. They don't want to have soil. Mostly those fructose lichens. There are many types of lichens. There are foliose, fruticose, fructose. I'm talking of particularly fructose lichen. These lichens don't live in an environment where there is a soil. They have created such conditions for life here on the rock, which are beneficial for some other type of living organism, but not beneficial for them. As a result, once they died because now they can't grow
आपके जहन में ये सवाल आ जाएगा, सर आप बोल रहे हैं कि ये एक रॉक था, इसमें कोई प्रोट्रिगुल आ गया, स्टेटिव रिप्रोडक्टिव यूनिट आ गया, इसमें ग्रो किया लाइकन ने, फिर लाइकन की डेथ हो गई, लाइकन की डेथ की वजह से इस रॉक पे, इस कूल लावा पे एक ऑर्गेनिक मैटर मिला, और फिर लाइकन का जो एक्सक्रीटिव मटीरियल था दैट वाज एसिडिक, तो उस एसिड ने रॉक को विदर किया, क्रोड किया, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल बन गया। अगर फिर एक आ जाए रिप्रोडक्टिव प्रोपेग्यूल ऑफ लाइकन्स, क्या वो ग्रो करेगा? नो, वो ग्रो नहीं करेगा। आपको पता है क्यों? क्योंकि अब इस लाइकन के मरने की वजह से यहां पे कंडीशंस फॉर ग्रोथ ऑफ लाइकन्स दे हैव एंडेड नाउ। अब लाइकन यहां पे ग्रो नहीं करेगा। यही मैं कह रहा हूं, इन इकोलॉजिकल सक्सेशन व्हाट हैपेंस, द ऑर्गेनिजम्स क्रिएट चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, produce changes in the environment which are favorable for next one, but not favorable for those organisms which create these conditions, which are responsible for these changes in the environment. So now a thin layer of soil is basically very helpful for a thin layer of soil is bryophytes. Now these are replaced by bryophytes. You know what actually succession means? If we will see the meaning of succession in terms of common words, succession means when one thing is replaced by second thing is replaced by third thing, but it has to stop somewhere. It has to stop somewhere. Same is the case here. Lichens were replaced by bryophytes, because bryophytes can live in an environment where there is a thin soil. There is a thin soil. Okay, lichens can grow without soil. They are not dependent on their on soil for their growth. Okay, now these are bryophytes. These grow, right? And after some time, they die. More organic matter gets added to the environment. Environment here is the rock, right? And they also, their excretive material is acidic. More corrosion of the rock takes place. As a result, a soil is formed. Now it is slightly thicker. It's thick. Now they die. Now then come the pteridophytes. Then come the pteridophytes. Now bryophytes have created conditions, changes in the environment, which are beneficial for pteridophytes, but harmful for themselves. इनके लिए ये सूदमंद नहीं है। ये कंडीशन जो किसी खास ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ने क्रिएट किया था, ये फायदेमंद था दूसरे ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए। उन ऑर्गेनिजम्स के लिए नुकसानदेह था जिन ऑर्गेनिजम्स को ने इनको क्रिएट किया था, इन कंडीशंस को ब्रूज किया था, इन कंडीशंस को। इसी तरह से द प्रोसेस गोज ऑन, देन कम द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंडोस्पर्म्स। इट्स द वे व्हाई दीस फॉरेस्ट यू आर सीइंग, दिस हैव बीन फॉर्म्ड बाय दिस इज नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट? बट एंड अल्टीमेटली अ कम्युनिटी is formed that is known as climax community. Now sometimes आपके दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि क्या ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, क्या ये चेंज नहीं हो जाएगी, इसको कोई रिप्लेस नहीं करेगा? मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, इन्होंने एनवायरनमेंट में जो कंडीशंस क्रिएट की है, जो चेंजेस क्रिएट की थी, प्रोड्यूस की थी, वो इनके लिए नुकसानदेह नहीं है, अगरचे वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फायदेमंद है, इनके लिए नुकसानमंद नहीं है। यही वजह है कि हम लोग क्लाइमेक्स कम्युनिटी को फाइनल स्टेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन मानते हैं, राइट? इस तरह से इस मैकेनिज्म में हो जाता है। तो लिहाजा मैंने आपको कहा कि ये रॉक है, ठीक है ना? रॉक में पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, अच्छा, वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर which I forgot to tell you, that I am talking of plants here, but don't take it
exclusively plants. With along these plants, animals also grow likewise. I will explain the examples when we will say the actual steps of ecological succession in our next video lecture. But you must not be under this impression that only the plants show succession. This is ecological succession. It's not plant succession. This is biotic succession. Along these plants, also the animals grow likewise. Right? Now, this is rock. Okay? Rock here. The first community which inhabited this area, this is known as pioneer community. जो मैंने आपको pioneer community. सबसे पहली one. And finally, when the big trees were formed, right? Gymnosperms, angiosperms, like that. This is known as climax community. What is the difference between pioneer community and climax? इनके दरमियान में जो communities थी, जो उनको मैंने आपको कहा था सेरे या सेयर, right? वो तो transitional communities है, temporary है, ठीक है? Pioneer community less stable होती है, right? Pioneer community less diverse होती है. इसका species composition बहुत कम होता है. जबकि pioneer climax community आपको पता है ये बहुत stable होती है, right? इसकी diversity ज्यादा होती है. This is how you can understand primary succession, secondary succession, hydrosphere, pioneer community, climax community, right? Primary succession में ऐसा एक एरिया है जिसमें कभी भी लाइफ नहीं थी, कभी भी ऑर्गेनिक मैटर था, कभी भी सॉइल नहीं थी. सेकेंडरी सक्सेशन उस एरिया में हो जाती है जहां पे लाइफ थी, बट बिकॉज ऑफ इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल कैलेमिटीज, उसमें ये वाइप आउट हुआ था लिविंग ऑर्गेनिज्म, और फिर वहां से सक्सेशन शुरू हो गया. ओके, नाउ कम टू द अनदर वन. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ecological succession? Characteristics of ecological succession. सबसे पहला, जब मैंने यहां लाइकन्स की बात करी थी और फिर जाते जाते मैं यहां क्लाइमेक्स कम्युनिटी में जिम्नास्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पहुंच गया था, तो पहला है ये जो ecological succession है ना, it proceeds from small sized plants to large sized plants, right? ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है ecological succession का. This ecological succession proceeds from small sized plants to large sized plant. You see in your earlier classes, lichens का size आपको पता ही होगा. They are microscopic. They are even very small, I may say, right? Now, number two characteristic. During ecological succession, the ecological succession proceeds from short-lived plants to long-lived plants. अगर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लांट्स की बात करें, इनका ये क्या बोलते हैं, ये एनिमल प्लांट्स हो सकते हैं, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ लाइफ को ये ग्रो करते हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा है. जबकि आगे जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी में हो जाता है ना, वो तो पेरिनियल्स होते हैं, बहुत सालों तक ग्रो करते हैं. इसके बाद नंबर 3 जनरल कैरेक्टरिस्टिक इकोलॉजिकल सक्सेशन का. ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, इसमें इट मूव्स फ्रॉम टेम्पररी टू द स्टेबल प्लांट्स. ये जो उतने ज्यादा हाईली स्टेबल प्लांट्स नहीं होते हैं, ठीक है, जल्दी चले जाते हैं लाइकन्स. फिर हम लोग को आते हैं स्टेबल प्लांट्स आते हैं, स्टेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट. इसके बाद चौथा जो है,
ये जो इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये जो इट प्रोसीड्स फ्रॉम lower biomass, right? Lower, productivity. No, I will tell you productivity differently. Lower biomass to higher biomass. इनका बायोमास कम होता है, इनका ज्यादा बायोमास होता है. ये सिंपल इनमें निश, वो जो फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम कहते हैं निश, नीचे जिसको कहते हैं NICHE कुछ होगा निश. ये एक हम ऑर्गेनिज्म के बारे में दो बातें कर सकते हैं. एक तो एड्रेस, अगर हम ऑर्गेनिज्म का एड्रेस पूछते हैं दैट इज हैबिटेट. फिर इसका प्रोफेशन, ये उस हैबिटेट में क्या करता है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम निश कहते हैं. निश ऑर्गेनाइजेशन इसका चेंज हो जाता है, इनके डिफरेंट फंक्शन ये परफॉर्म करने लगते हैं ऑर्गेनिज्म. इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो सक्सीडिंग कम्युनिटीज और फाइनल क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड निश डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं. मनी फंक्शंस दे परफॉर्म, राइट. इसके बाद पांचवा जो कैरेक्टरिस्टिक है, हाँ मैं आपको बता रहा था कि एक चीज जो डिक्रीज होती है इकोलॉजिकल सक्सेशन में, वंस इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसीड्स फ्रॉम पायनियर टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी, द नेट प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस. ये नेट प्रोडक्टिविटी इनकी जो है ना, दिस डिक्रीज. व्हाई? बिकॉज सपोज these biolichens, okay, these were replaced by bryophytes. Bryophytes were replaced by pteridophytes. Pteridophytes were replaced by gymnosperms. Gymnosperms were replaced by angiosperms. This lichen group के कंपेयर में ब्रियोफाइट ग्रुप का सर्वाइवल रेट ज्यादा था, ठीक है ना. इनकी सर्वाइवल रेट ज्यादा होने की वजह से इकोसिस्टम उतना ज्यादा स्टेबल नहीं था. दिस इज द रीजन व्हाई द नेट प्रोडक्टिविटी इन इकोलॉजिकल सक्सेशन डिक्रीजेस, बिकॉज द सक्सेडिंग ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनकी जो सर्वाइवल रेट होती है ये ज्यादा होती है, राइट. क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि इसमें अब ज्यादा चेंजेस होती है. इनका जो इकोसिस्टम होता है वो लेस स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है. इसके बाद छठा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये एवोल्यूशन और सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन अगर मैं बात कर लूं, ये पैरेलल प्रोसेस है, सेम. क्योंकि एवोल्यूशन में भी आपने सुना होगा लेस एफिशिएंट लिविंग ऑर्गेनिज्म is replaced by more efficient, and that more efficient is replaced by most efficient living organism, right. Here you also see same thing happening. We have seen that these were less efficient, then these were replaced by more efficient, these more efficient were most. So in context of this example, I may say that evolution and ecological succession are parallel. They are basically same. Darwin has also, mentioned of this, succession. These are some characteristics. I hope that you may have understood today's video lecture. In our next video lecture, we will discuss steps in formation of ecological succession, and we will just give an example of primary succession in an area. Suppose on a rock and also in water. Till then, bye. Keep learning. Okay.